Good morning to all my dear students and welcome to Zoology online class. And I have, that is about 15 or 20 days back, that is I had taken one class only in the reproduction. And this is the second class in the reproduction. So, let me repeat the thing which I had taught you in the previous class. I had given the definition about the reproduction. Reproduction is a biological phenomena where one individual produces new daughter individuals of their own type. Clear? Then the reproduction helps for the continuation of the race. For the continuation of the race. Reproduction means the increase of the number. Without the reproduction, the number will not increase, and that is the society will not exist. Clear? And under that, I had told you that is reproduction is of different types in the animals, in different animals. In simple animals, it is simple varieties or simple type, and in higher cases, in the complex and higher cases, it is complicated one. It is complicated one. So in a broad sense, it is divided, the reproduction has been divided into two groups. One is asexual, another is the sexual, which I had taught you in the previous class. Asexual, where there is no recognition of sex, only one individual, uniparental. One individual is sufficient to produce or to reproduce. Clear? So it is uniparental. That is whether it may be the male or the female. Without the recognition of the individual, that individual can reproduce. Clear? Then only the somatic cell helps in the reproduction. No, that is the participation of a gamete cell. I had told you in the previous class. So it is otherwise called as the somatogenic reproduction. Clear? Then, where the amitotic and mitotic division takes place, no meiotic type of division. And all the individuals which are produced, they are of the similar varieties, or they are morphologically and genetically they are similar to each other, along with their parents. So they are called as the clones. They do not help in the evolution, there is no variations. So it does not help in reproduction. And the individual which that is formed, which are formed, they are less adaptive to the changing environmental conditions. So anyway, so these are the, that is the characteristics of the asexual reproduction. Under the asexual reproduction, I had told you that is, it is of different types. Binary fission, multiple fission, then is fragmentation, etc. In the previous class, I had described all about the binary fission. Binary fission, bi means two, fission means division. One individual divides into two. So, it is binary fission. One individual divides into two daughter individuals. So it is called as the binary fission. And where either it takes in a mitotic way or the mitotic way. In a unicellular organism like yeast, it takes place a mitotic process. But in case of the amoeba, mitotic and amitotic process both occurs in that. Clear? And I had told you that is in case of the amoeba, I have given one example that
in case of the amoeba, depending upon the plane of a furrows or the cytokinesis, plane of cytokinesis, it is of different types. One is horizontal, another is longitudinal, another is oblique one, etc. Clear? So, and lastly I had told you that is the individuals which are, that is the organisms that undergoes, that is the binary fission, have no, they are immortal, the natural death does not occur because the parent's body behaves as a reproductive unit and continues through the daughter body. Clear? The parent body behaves as the reproductive unit and continues through the daughter body. Clear? So let me start today about the multiple fission. The second one is called as the multiple fission. Multiple fission. Clear? So in the multiple fission, from its name it is very clear. आनारू कौन होची एटा क्लियरली जना पड़ुची आमे कौन पढ़िथिले बाइनरी फिजन रे बाइनरी that is bi means two, but multiple means one individual divides into many individuals, or one individual divides into many individual. Fission means division. Clear? So one individual divides into many individual, so it is called as the multiple fission. In case of the protozoans like the amoeba, the multiple fission takes place, and other protozoans also. The multiple fission generally takes place in the unfavorable condition. Are you understanding what is unfavorable condition? Unfavorable condition means धर तमे पाठ पढ़ी सार पाठ पढ़ी सारा मैरेजेबल बॉय एज है किंतु तुम चाकरी ना तुमको बापा माँ कहले बाबू रे मैरेज कौन दैट इज रिप्रोडक्शन, दैट इज यू आर गेटिंग द लाइसेंस फॉर द रिप्रोडक्शन मैरेज, सो यू आर डिनाइंग, तुम्हें मना करुच कहीं, because that is the unfavorable condition for you. For the animals, that is temperature, light, food, and the environmental conditions are that is either the favorable or the unfavorable condition. If they are not suitable for the individual, then that situation or that condition is called as the unfavorable condition. So, in case of the multiple fission, that is, it occurs in unfavorable condition. Clear? In the case of the Plasmodium vivax, malaria parasite, Plasmodium. In case of the Plasmodium, it is a protozoan parasite. It is a protozoan parasite जोटी कौन होची फेवरेबल कंडीशन ले मल्टीपल फिजन होची जोटी कि इट इज एन एक्सेप्शनल केस, एटा गोटे एक्सेप्शन केस व्यतिक्रम जोटा कि अनफेवरेबल कंडीशन ले कौन हबो ना फेवरेबल कंडीशन ले तार मल्टीपल फिजन हबो हला बाय द प्रोसेस कॉल्ड एज द स्काइजोगनी, दैट इज द प्रोसेस टाको कहंती स्काइजोगनी। से प्रोसेस रे जो प्रोसेस रे हुए से प्रोसेस का कहती स्काइजोगनी। तुम पढ़ो ये जो जिते पढ़ा हम तुमको कौटी ना डिजीज रे हला ए सेकेंड ईयर रे अच्छी दैट इज द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम से तुम जानिबो हला। तापर आमे देखिबा मल्टीपल फिजन इन एमोइबा, हम गोटे एग्जांपल नेबा दैट इज मल्टीपल फिजन इन एमोइबा। मल्टीपल फिजन इन एमोइबा इज ऑफ टू टाइप्स, दैट इज encystment, that is encystment, and another is the sporulation. One is the encystment, another is the sporulation.
One is the encystment, another is the sporulation. Encystment, cyst माने कौन? गोटे प्रोटेक्टिव वाल जो गोटे एनिमल उपरे तैयारी हुए, that is the cyst formation हुए है। सपोज गोटे दिस इज द एनिमल एंड अनफेवरेबल कंडीशन ले या ऊपर गोटे कवरिंग तैयारी हो है, या ऊपर गोटे कवरिंग तैयारी हो, दैट इज कॉल्ड एज द सिस्ट वाल एंड एटा ताको प्रोटेक्ट करिवो आउ ए जो प्रोसेस रे एटा तैयारी होची दैट इज कॉल्ड एज द एनसिस्टमेंट। क्लियर? एठी एमिबारे कौन होची ना एनसिस्टमेंट कंडीशन ले हबो आउ गोटे हबो स्पोरोलेशन। दीटा प्रोसेस मेथड इज डिफरेंट बट बोथ आर ऑकरिंग इन द अनफेवरेबल कंडीशन। एटी कौन हम प्रथम आम आसवा दैट इज द एनसिस्टमेंट कंडीशन। एनसिस्टमेंट कौन हम सपोज दिस इज द एमोइबा। एमोइबाटा जो अनफेवरेबल कंडीशन हम एमिबाटा कौन हम आस्ते आस्ते स्क्वीज हो जो बड़ बड़ सिड़ पुड़िया अच्छी एगुड़ा कौन हम छोट छोट परिणत हो एमती राउंडेड सेप हो अनफेवरेबल कंडीशन ताने हुए तो भल वाटर ना टेम्परेचर ना एमती तापर कौन हम ना ताऊपर तीन टा सिस्ट लेयर तैयारी हो 3 लेयर काइटिनस दैट इज काइटिनस सिस्ट वाल तैयारी हो ये जो 3 टा लेयर हम दैट इज दी ये कौन हम ना यहाँ 3 टा दैट इज दी काइटिनस सिस्ट वाल तैयारी हम काइटिनस काइटिनस दैट इज द काइटिनस सिस्ट वाल तैयारी हो ये जो काइटिनस सिस्ट वाल हो गला ता धीरे इंडिविजुअलटा रिमेन्स टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम द अनफेवरेबल कंडीशन। से अनफेवरेबल कंडीशन को निजक रक्षा करने ता भितर से प्रोटेक्टिव होकर रहा। तापर कौन हम ना द न्यूक्लियस व्हिच प्रेजेंट इनसाइड दैट इट डिवाइड्स इनटू ए लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लाई। एटा गुड़ाए न्यूक्लाई कैरियोकाइनेसिस प्रोसेस रे एटा कौन हम ना गुड़ाए न्यूक्लाई रे परिणत हो जार नंबर पाखापाखि 500 रु 600 हो दैट इज दिस आर कॉल्ड एज द न्यूक्लाई। दिस आर कॉल्ड एज न्यूक्लाई दैट इज दी डिवाइड बाय मेनी दैट इज रिपीटेड एमाइटोसिस हो किंबा माइटोसिस हो जहाँ भी हो एटा होची 500 रु 600 हो। तापर कौन हम ना प्रति न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय सर्टन अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म। सर्टन अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म एज ए रिजल्ट ऑफ व्हिच each nucleus is converted into a daughter amoebola that is a daughter amoebola or daughter amoeba that is called as the amoebola। plural हो गले amoeboli एडी ई हे जीवो plural हो गले ई हे जीवो एटी amoeboli a daughter amoebola or that is otherwise called as the pseudosporidiospore that is pseudosporidiospore that is amoebola or pseudosporidiospore। Clear? On the approach of the favorable condition जो फेवरेबल कंडीशन आसीबो सेतले कौन हम ना ये जो सिस्ट वालटा ब्रेक करिवो ये जो 3 लेयर सिस्ट वाल इट ब्रेक्स इट विल ब्रेक एटा फाटी जीवो हैला एटा फाटी गले ता भितरु डॉटर एमिबा गुडाक बाहरिबे। दिस आर कॉल्ड एज द एमिबोली। आउ से माने खाइबे पीबे हैला आउ दे लीड्स सेपरेट इंडिविजुअल। तमाने एठी कोन हला गुटे इंडिविजुअल पाखापाखि 500 रु 600 टा इंडिविजुअल बाहरले हैला। सो दिस इज कॉल्ड एज द एनसिस्टमेंट। एनसिस्टमेंट रे कोन हला ना द टोटल बॉडी द होल बॉडी इज कवर्ड बाय द सिस्ट वाल is covered by 3 layer cyst wall that is called as the chitinous cyst wall that is formed by a chitinous cyst wall and the daughter individuals are called as the amoebola। Clear? On the approach of the favorable condition that is the cyst wall breaks and the daughter amoeboli that is comes to the outside and after some days it grows to a that is young individual। So in this way that is the encystment that is the condition or the encystment type of multiple fission is taking place। Clear? Besides here another thing is that clear that is called as the condition cyst wall clear and
Here this is the encystment. Then you come to the sporulation. So what is the difference between encystment and sporulation? In case of the sporulation, what happens? जेतो sporulation होची एटी कौन होची ना एमिबाटा ठीक सेमती एक्टिव एमिबा आस्ते आस्ते से कौन होबो ना राउंडेड हो जिवो इनएक्टिव हो जिवो बिकॉज द कंडीशन इज अनफेवरेबल द कंडीशन इज अनफेवरेबल आउ एटी कौन होबो ना एटी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अच्छी ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टा ब्रेक करिवो आगे आ भितर जो न्यूक्लियर मटेरियल्स अच्छी एगुड़ा सब छोट छोट खंडरे परिणत हो दिस इज कॉल्ड एज द एमाइटोसिस प्रोसेस एमाने पाखापाखी केते हो ना पाखापाखी 200 एटा 200 सेगमेंट रे परिणत हेबे एगुड़ा को कहा जाए क्रोमाटिन ब्लॉक एगुड़ा कहा जाए क्रोमाटिन ब्लॉक एगुड़ा का न्यूक्लियस कहा जाए कारण यार न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नाही ए क्रोमाटिन ब्लॉक जिते गोटे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो जाए सेतबले सेटा कन्वर्ट हो जाए न्यूक्लाई न्यूक्लाई प्रति न्यूक्लाई उपरे किसी साइटोप्लाज्म कवर हो जाए ता परवर्ती काल रे हला एई साइटोस्पर्म हो गला आउ ता उपरे गोटे सिस्ट वाल तैयारी हुए ता उपरे गोटे सिस्ट वाल तैयारी हुए एंड दैट इज कॉल्ड एज द स्पोर तापर सेटा को आम कहवा स्पोर एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज द स्पोरुलेशन है दि प्रोसेस कहगला स्पोरुलेशन एंड दीज इंडिविजुअल्स आर कॉल्ड एज द स्पोर्स क्लियर ए स्पोर्स गुड़ाक कौन हम ना जो फेवरेबल कंडीशन आसो ना तापर कौन हम ना जो ये एमती टोटाल इंडिविजुअल उपरे स्पोर वाल तैयारी हो गला सेतबले ये टोटाल इंडिविजुअलटा कौन हम ना डिसइंटीग्रेट कर आटार किसी माने नहीं तेणु तार ये पाखापाखि 200टा स्पोर तैयारी हो आउ फेवरेबल कंडीशन आइले ये स्पोर वाल प्रति स्पोर वालटा नष्ट हो ता भितर गोटे एमोइबा बाहर को बाहर है सो दिस इज द प्रोसेस ये आम जाना जे कि फेवरेबल कंडीशन सांगे सांगे चली आसला अनफेवरेबल कंडीशन सांगे सांगे चलीगला मन कर ये एमिबाटा कौटी रुहे ना एमिबाटा साधारणतः रुहे ये जो ग्राउंड रे जो पानी रो जस्ट ग्राउंड उपरे रुहे पानी रो जस्ट ग्राउंड उपरे माटी उपरे रुहे है माटी हो बाली हो जेटा रुहे आज गोटे पोखरी छोट पोखरी कि खाल अच्छा एमिबा मैंने से मैंने मन कर पानी सुखी आसला खरा दिन है आस्ते आस्ते पानी सुखी आसला है सुखी आसला यहाँ तार अनफेवरेबल कंडीशन है किछि दिन पर कौन हम ना अल्प अल्प टे पानी अच्छी से कौन है ना मल्टीपल फिजन करुच्ची माने ता भितर ता ऊपर आइदर सिस्ट वाल हो कि स्पोर होगी रहा है ये जो रहा या द्वारा कौन एटा माइक्रोस्कोपिक एटा खाली आखि देखा जाती नहीं है तो तापर कौन है ना से समय अल्प अल्प टे पानी अच्छी ये समय गोटे चढ़ई बा बग आसिकी से छोट छोट माछ को खाइला है खाई से गुड़े कादुआ लगिला ता गुड़े से कादुआ शह शह हजार हजार एमोइबा लगी थे है तापर से उड़ीगला उड़ी जाइए गोटे भल पोखरी बा भल नदी बा भल जगार पानी थिबा जगार से जाइए पहुँचीगला से ठिया होगला बा से जाइए पहरला तेणु से समय कौन हम ना ता गोड़ू थी एमोइबा माने फेवरेबल कंडीशन पाइबे सिस्ट वाल ब्रेक कर भितर डटर एमिबा काढ़ी लीड कर इंडिविजुअल लाइफ सो दिस इज दैट इज कॉल्ड एज द मल्टीपल फिजन टा कौटी है ना ये जो मल्टीपल फिजन मेनली साहाय्य कला कौन ना डिस्पर्सल एंड दैट इज कॉल्ड एज द पेरिनेशन dispersal and perination dispersal and perination dispersal and perination dispersal and perination माने कौन dispersal होची विच्छुरित है तो गोटे जगार पाखे जब समस्ते तैयारी हे गोटे गछ मन कर गोटे गछ होती गछ पाखे जब सब मंची गुड़ाक तारी तले पड़ी गछ हम ताने माँ गछ भी भल हम नहीं कि जो डटर प्लांट भी भल हम ना
से कौन कला ना चढ़ई फलटा को खाइला अन्य जगह हगिला से गला बा पशु पक्षी देहरे लगिला कि कंटा जातीय फल से अन्य जगह पड़ा सो दिस इज कॉल्ड एज द डिस्पर्सल दिस इज कॉल्ड एज द डिस्पर्सल विच्छुरित है जहाँद्वारा कि जो छोट गछटा हम से बढ़ सब गला आउ कौन है ना द्वितीय नंबर हूँ पेरिनेशन पेरिनेशन माने दैट इज पेरिनेशन हूँ जोटा कि कंडीशन खराब हो गला ए गड़ियार कंडीशन बा से जो पानी थिला से पानी सब सुखीगला से कौन है ना एनिमालटा मरीज तेणु यही कंडीशन से कौन ना बहुत दिन धरिकी वेट कर फॉर दी फेवरेबल कंडीशन सो दिस इज कॉल्ड एज दी पेरिनेशन है तापर आम आसवा नेक्स्ट इज कॉल्ड एज दी बॉडिंग नेक्स्ट इज कॉल्ड एज बॉडिंग एटा चलीगला बाइनरी फिजन एंड दी मल्टीपल फिजन then another thing you come to that is the bonding हाई स्कूल सब पढ़ी बॉडिंग that is the bonding बॉड रु है बॉडी बॉड रु है बॉडिंग एटा बॉड बॉड रु है बॉडिंग है बॉड कौन तुम हाई स्कूल पढ़ी गोटे बॉड माने कढ़ बॉड माने कढ़ एक्चुअली तार उड़िया माने हूँ कढ़ हाई स्कूल पढ़ी एमती हाइड्रा हाइड्रार एमती गोटे छोटिया प्रोजेक्शन बाहर दिस इज कॉल्ड एज द बॉड है ये प्रोजेक्शनटा आस्ते आस्ते बढ़ी की गोटे नुआ छोट हाइड्रा परिणत हम एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज द बॉडिंग दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज द बॉडिंग तेणु प्रथम आम उड़िया कहले चलो ना तेणु प्रथम आम कहवा व्हाट इज बॉड ए बॉडिंग इज अनदर टाइप ऑफ सिंपल method of reproduction asexual type of reproduction hala which occurs in the lower grade of animals which occurs in the lower grade of animals clear bud that is what is bud bud is the reproductive unit which appears as the outgrowth of the animal's body bud is an outgrowth which appears as that is bud is a reproductive unit which appears as an outgrowth of the animal's body गोटे एटा गोटे रिप्रोडक्टिव यूनिट कारण यार भितर आस्ते आस्ते गोटे इंडिविजुअल तैयारी हम सो दिस इज ए रिप्रोडक्टिव यूनिट एंड दैट इज द बॉडी इज एन रिप्रोडक्टिव यूनिट बॉडी इज ए रिप्रोडक्टिव यूनिट व्हिच डेवलप्स or which appears as a outgrowth of the parent body which appears as the outgrowth of the parent body clear so the process by which the bud converts into an individual or the process by which an individual develops from a bud is called as the budding is called as the budding clear and it occurs generally in favorable condition it occurs in the generally in the favorable condition it occurs in unicellular organism as well as in multicellular lower grade of organisms एटा जतबेले आमे unicellular organism पाखरे जिबा suppose in case of the yeast a small one or two or more that is the daughter projection develops and which converts into one individual and the process by which these are developed that is these are called as in the favorable condition here small unicellular outgrowth are appear on the surface of the parent body which contains nucleus and some amount of cytoplasm that is which contains nucleus and a small amount of cytoplasms and later on they are separated and leads that is independent life later on they are separated and leads that is the independent life
And another thing is that sometimes they are attached to each other. They do not separate. They do not separate. And in this way, it forms a chain-like fashion. It forms a net-like fashion, and that is called as the torulation. That stage is called as the torula. The stage is called as the condition is called as the torula, and the condition is called as the torula, and the process is called as the torulation. That is, process is called as torulation. That is, the process is called as the torulation. So this is the in unicellular organism. But bujhala. So what is the difference between bud and binary fission? In binary fission, the individual divides into two similar daughter cells. But here, the bud which develops as an outgrowth, it is of small size, and the parent body is large size. Clear? That is, it divides into two, but at the same time, it may develop one or more. Clear? So this is the difference between budding and the binary fission. Then you come to that is the budding in case of the multicellular organisms. Then budding in case of the multicellular organism. In the budding in case of the multicellular organisms, it is of two types. One is the exogenous budding, another is called as the endogenous budding. The budding in case of the multicellular organisms बुझी जो organism मानकर सेल माने more than one multicellular बहुत सेल लेती we are the multicellular cow is multicellular unicellular है protozoans हला जो मानकर बॉडी गुटिए सेल लेती से मान हेले unicellular हला multicellular जो मानकर बॉडी more than one cell लेती हला तापरे in case of the that is two type, one is exogenous, another is endogenous budding. That is in multicellular, that is exogenous, and another is the endogenous. That is exogenous. Here you take the example of amoeba, the hydra. Sorry, that is the hydra. You take the example of the hydra. You know hydra is a diploblastic animal. Hydra ta dita layer re tiyari body ta diploblastic hala eta hochi ectoderm eta hochi endoderm. Clear? Au hydra case re गुटे बडिंग जोन अच्छे साधारणतः तो मिडिल तलू को होची बडिंग जोन है बड गुड़ा सारा या तलू को हुए इाड़ी की बड हुए नहीं ऊपर आड़ी की यही जगह एटी एका बेले गुटे की दीटा एमती प्रोट्रूबेरेंस बाहर है गुटे कि बेसी कि जहाँ भी हो प्रोट्रूबेरेंस दैट इज कॉल्ड एज द बड एटा केमिति बाहरला ना बाय द रिपीटेड डिविजन ऑफ द एपिडर्मल इंटरस्टिशियल सेल दैट इंटरस्टिशियल सेल एटा केमिति हला ना ए जो एक्टोडर्म रे 7 प्रकार सेल अछि एंडोडर्म रे 5 प्रकार सेल अछि ए एक 7 प्रकार भितरे एटा होची गुटे अछि एक्टोडर्मल इंटरस्टिशियल सेल 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 मान को मझिरे इंटरस्टिशियल सेल सेमिति एटा होची एंडोडर्मल इंटरस्टिशियल सेल 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 मझिरे एडजस्ट करिया पई से गुडा को अछि हला आ सेमाने टोटिपोटेंसी सेमाने एनी सेल टाइप की कन्वर्ट हेई पारिबे हला एटा दैट इज ए जो एक्टोडर्मल इंटरस्टिशियल सेल से अन्य 6 प्रकार सेल को कन्वर्ट हेई पारिबो एंडोडर्मल इंटरस्टिशियल सेल अन्य 4 प्रकार सेल को से कन्वर्ट हेई पारिबो हला कारण ये 7 रु से गुटे चली गला आ रहला 6 ये 5 गुटे चली गला 4 रहला तेनु एडी रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन कहार हम ना एक्टोडर्मल इंटरस्टिशियल सेल हेले एटी गोटे छोट प्रोजेक्शन बाहर है ये गोटे छोट प्रोजेक्शन बाहर सॉलिड स्ट्रक्चर छोट प्रोजेक्शन बाहर है दिस इज कॉल्ड एज द बड तापर कौन हम आस्ते आस्ते ता भितर को एंडोडर्मटा डेवलप कर एंडोडर्म डेवलप कर गैस्ट्रोभास्कुलर कैविटी भी ता भितर को पशिबो है पशिला परे 2 दिन बेलू एटा हॉलो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर हो आउ ता ऊपर माउथ तैयारी हो आउ टेंटाकल डेवलप करिवो हला परे ए मझिरे गोटे कन्स्ट्रिक्शन डेवलप करिवो हला
कले यहाँ या कतु सेपारेट हो गोटे नुआ हाइड्रा रे से माने डटर हाइड्रा रे परिणत हम आउ कालक्रमे यहाँ आस्ते आस्ते बढ़ी के गोटे दैट इज बड़ हाइड्रा परिणत हम सो दिस इज कॉल्ड एज द एक्सोजिनस बॉडिंग देन एक्सोजिनस बॉडिंग होची कौन होची ना बॉडीर बाहर रे गोटे बॉड तैयारी होची बा रिप्रोडक्टिव यूनिटा प्रथम देखा होची बॉडीर बाहर अंश रे दैट इज कॉल्ड एज द एक्सोजिनस बॉडिंग एक्सोजिनस बॉडिंग रे कौन हबो ना प्रथमे गोटे सॉलिड आउट ग्रोथ हबो आउटसाइड रे बिलो द रिप्रोडक्टिव बिलो द बॉडिंग जोन क्लियर गोटे ही पारे दीटा ही पारे बेसी भी ही पारे हला एटा केमिति हबो ना बाय द रिपीटेड डिविजन ऑफ दैट इज एक्टोडर्मल इंटरस्टिशियल सेल हेला परे एटा गोटे सॉलिड बल्ब लाइक स्ट्रक्चर हबो आउट ग्रोथ हबो तापरे या भितर को फंपा हबो कारण एंडोडर्म ता भितर एक्सटेंशन करिवो एलोंग विथ द गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी ता भितर को पसिवो पसिला परे 2 दिन बेलू ता ऊपरे हाइपोस्टोम डेवलप करिवो हाइपोस्टोम डेवलप करिवो हाइपोस्टोम यू नो हाइपोस्टोम एमती गोटे प्रोजेक्शन ता ऊपरे माउथ तैयारी हबो आउ तार टेंटाकल गुडा तैयारी हबो आउ तापरे तार गोटे कन्स्ट्रिक्शन देखा हबो एटी मझिरे तापरे सेटा को से सेपरेट कर दबो हला कर देला परे सेटा बाहरिबो के गोटे छोट हाइड्राटे तैयारी हबो जोटा कि मा बॉडी को थ्रू अलग हो हला तापर आमे देखिबा दैट इज दी एला एटा चली गला दैट इज इंडिविजुअल तापर आमे देखिबा एंडोजिनस बॉडी कौन ना एंडोजिनस बॉडी होची इनसाइड दी बॉडी एटा कहार होची ना स्पंजेस ग्रुप रे एटा साधारणतः हुए स्पंज रे हला स्पंज ग्रुप रे एटा साधारणतः हुए स्पंज रे कौन हेतिबो ना So porifera, here this is the pore bearing animal, these are called as the porifera, they are sponges, clear? यार कौन हबो एटा होची that is the spongosil, एटा होची spongosil, एटा होची osculum, हला एटा इज इनकरेंट कैनाल ए बाटे वाटर जीवो जाई के बाटे बाहरिवो हला पढ़ाई थले क्लासिफिकेशन ले तो एमती बीटिंग होचे एठी सब सिलिया अछंती से कहूची ए जो स्पंज बॉडी ये कौन करिवो ना फेवरेबल कंडीशन ले या बॉडी रो मेसोग्लिया रे और मेसोग्लिया बा मेसेनकाइमा सेल ले एमती राउंडेड सॉलिड बल्ब लाइक स्ट्रक्चर सब तैयारी होबो and these are called as the gemmules, these are called as gemule, these are called as the gemmules एगुड़ा गेम्यूल्स गुड़ा तैयारी हो से गेम्यूल्स गुड़ा कौन है प्रति गेम्यूल कौन है ना दीटा प्रोटेक्टिव लेयर थिबो दीटा प्रोटेक्टिव लेयर थिबो आउ ता ऊपर गोटे कणा थिबो हला आउ ता भितरे फूड लेडन सेल थिबे that is called as the archaeocyte cells, these are called as the archaeocyte cells, archaeocytes, clear? आउ ए दीटा हला तार प्रोटेक्टिव लेयर्स आ बेले बेले प्रोटेक्टिव लेयर्स देयर स्पिक्यूल्स थाए एमती स्पाइन भलिया सो स्केलेटन थाए ता कहंती स्पिक्यूल्स ता कहंती स्पिक्यूल्स आउ ता ऊपर गोटे कणा थाए ता कहंती माइक्रोफाइल हला एमती सह सह दैट इज दी राउंडेड बॉडी सॉलिड राउंडेड बॉडी तैयारी हम कौटी ना स्पंज बॉडी रे हला बॉडी भित्तिरे तो ये कौन हम ना ये जो इन दैट इज दी फेवरेबल कंडीशन तापर कौन हम ना जितेबले रिप्रोडक्शन हम से कौन हम ये किसी आर्कियोसाइट सेल एमाने ये माइक्रोपाइल देके पलि आसबे बाहर को थ्रू दी एक्सकरेंट कैनाल वाटर कैनाल बाहरी आसी कौन है ना से माने परवर्ती काल रे डेवलप होगी आस्ते आस्ते मोरोला ब्लास्टुला गेस्टुला एमती होगी आस्ते आस्ते स्पंज रे परिणत हेबे
So this is called as the gamule, and these are called as the gamule, and the process is called as the gamulation. The process is also called as the gamulation. So another thing is that gamule and the gamulation. So another thing is that the in case of the exogenous and the endogenous, exogenous रे डॉटर टा सेपरेट हला नहीं जत पंत से फुल स्टेज है ही नहीं, पेरेंट बॉडी को थ्रू सेपरेट हला नहीं जत पंत से फुल स्टेज है ही नहीं, किंतु डॉटर केस जो एंडोजिनस रे एंडो मीन्स इनसाइड बॉडी भितर होची एठी तार ए जो यंग इंडिविजुअल डेवलप है ही नहीं किंतु से माँ दैट इज द पेरेंट बॉडी को थ्रू अलग ही जाउची हला एतिकी पर्यंत आज आम गले हला जे एति पर्यंत आम गले आ परे आम देखिबा फ्रेगमेंटेशन या परे आम देखिबा फ्रेगमेंटेशन आर क्लास को हला।